तो कल बच्चों हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के तहत रोशनी की डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाली जो डिवाइसेस थी उनको देखा, जो कि मिरर्स थे। आज हमारी एक दूसरी लाइट की प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिफ्रैक्शन, हम उसको देखेंगे। तो पहली बात ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, इसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट्स क्या है हमारी जिंदगी में पहले उन्हें देखेंगे। तो आप कहेंगे अच्छा ये क्यों होता है, तो फिर बताएंगे इस वजह से होता है, ये है रिफ्रैक्शन। देखें जी, आपने बार आगे देखा होगा इस तरह की चीज, क्या आपने पेंसिल को डिप किया एट सम एंगल इन द ग्लास ऑफ वाटर, तो पेंसिल आपको टेढ़ी नजर आती है। अब ऐसा क्यों है? इफ वी डिप one end of the pencil or some other object into the water at an angle to the surface, the submerged part looks bent as shown in the figure. ये हम देखते हैं, देखी हुई चीज है। अब ऐसा होता क्यों है? Its image is displayed because the light coming from the underwater portion of the object changes direction as it leaves the water. क्या कि जो इट्स इमेज इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द अंडर वाटर पोर्शन, वो रोशनी जो पानी के नीचे वाले हिस्से से आ रही है, जब वो हवा में दाखिल होगी तो अपने रास्ते को चेंज करेगी, अपने रास्ते से हट जाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं, बल्कि एक मेरे पास वीडियो है, पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। Over the past 3 lessons, we have been looking at reflection closely. Today, we are going to investigate the refraction of light. By the end of today's lesson, you will be able to define refraction of light and draw a simple ray diagram to show how light is refracted through different objects. Remember that when we put the pole into the pool, it looked like it changed shape. आप समझ आए? ये तो आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है डंडे का, लेकिन इधर देखें, डंडा आपको टेढ़ा नजर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इसको आप ये डायग्राम, क्योंकि मुझे इनकी डायग्राम बड़ी पसंद आई है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डायग्राम, ये स्टिक थी, ठीक है, आपने यहां से देखा। अब हुआ क्या, स्टिक के बॉटम एंड से या लोअर एंड से रेज ऑफ लाइट आई, और आपको पता है वो रिफ्रैक्ट करेंगी, यहां आके अपना रास्ता चेंज करेंगे। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा, उसकी आंख में यहां से रोशनी पड़ेगी, और एक ये टॉप एंड है, यहां से रोशनी आके उसकी आंखों में पड़ेगी। अब होगा क्या, बागौर से सुनिएगा, अब होगा क्या कि यहां से बहुत सारी रेज उसकी आंख में, हम बताना इमेज कैसे बनता है कि सेम पोर्शन से रेज ऑफ लाइट निकल के जब जाके आपस में मिलती है दोबारा से, तो वहां इमेज बनता है। अब क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि रोशनी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे सफर करती है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता है कि हमारी आंख में जो इस डंडे का इमेज बनता है वो कैसे बनता है, हम यहां पे बनता है। नहीं समझ आया? हमारा ब्रेन खुद ब खुद इन रेज ऑफ लाइट को पीछे प्रोजेक्ट करता है, यहां पे, समझ आया? और इसका इमेज हमें यहां बनता हुआ दिखाई देता है, यहां। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। रेज ऑफ लाइट ने बेंड किया, और हमने तो जो रेज ऑफ लाइट आ रही है उनकी सीध में देखना है कि यहाँ पे कहीं उसका इमेज है, लेकिन हकीकत में डंडा कहाँ पे होता है? नीचे होता है। तो ये बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें जो है वो स्टिक बेंट नजर आती है, बेंडेड नजर आती है। Because the light from the pool bends to different objects. Remember that when we put the pole into the pool, it looked like it changed shape. We discovered in lesson 2 that this was because the light from the pool
bends as it leaves the water. अब हम यही सोच रहे होते हैं ना कि ये रोशनी की शुआएं सीधी बाहर निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बेंड करती है। This was the diagram we drew to explain what we were seeing. Here we can see that the light bends as it leaves the water, and our brains think that the light travels in straight lines, so it appears as if the pole has been bent. We call this refraction. What is actually happening here is that when light moves towards a boundary, like moving from air into water, it may be reflected at the boundary or it may cross the boundary. When this happens, light may change direction. अगर तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस आ जाए, वो तो रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन अगर वो बाउंड्री को क्रॉस करके अगर मीडियम में दाखिल होगी तो अब वो रिफ्लेक्ट होगी, अपने पाथ को चेंज करेगी। But is that all that is happening? And why does the light change direction? अब ये लाइट अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करती है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड भी डिफरेंट है। वाटर में स्पीड कुछ और है, एयर में स्पीड कुछ और है। 3 करोड़ मीटर पर सेकंड है मेरा 3 मटेरियल 10⁸ और पानी में मेरे ख्याल में 2.3 टाइम्स 10⁸ है, तो बहुत कम है हवा की निस्बत पानी के अंदर। तो ये इसी वजह से, क्योंकि जब जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो मीडियम है उसकी डेंसिटी चेंज होती है। डेंसिटी चेंज होने से जो स्पीड ऑफ लाइट वेव्स है वो भी चेंज होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट वेव्स के चेंज होने की वजह से क्या होता है, लाइट जो है वो अपना रास्ता चेंज करती है, वो अपने रास्ते से हट जाती है। First, we need to take note that although we draw only a thin line to represent the path that light travels, the line actually represents a whole bunch of light rays together. We refer to this bunch of light rays as a wave front. वेव फ्रंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि हमारे पास जो सरफेस है, ये जो वाटर सरफेस थी, उसके ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो उनको मिला के एक लाइन बनेगी, दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। नहीं समझ आया? ए सरफेस ऑन व्हिच ऑल द पार्टिकल्स आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट्स हमने वहां पे बनाई थी फर्स्ट चैप्टर में। So, instead of drawing just a single line, we could draw a series of lines that lie at 90 degrees to the direction of wave motion. समझ आया? हमने क्या किया, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जो कि पैरेलल हैं और ये शो कर रही हैं किसको, वेव फ्रंट्स को, और ये वेव फ्रंट्स किसको शो कर रही हैं, क्रस्ट को। ठीक है, और इनके 90 डिग्री पे हमने एक रे ड्रॉ की, तो रे वेव फ्रंट्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। Now, these lines together represent the wave front, and they will hit the boundary together at the same time. To illustrate what happens at a boundary, we are going to compare the wave front to an axle of a car with 2 wheels. The wheels are approaching a boundary between tarred road and a patch of mud. Watch carefully what happens. ऐसे होता नहीं होता, जब गाड़ी फॉर एग्जाम्पल रेत जो है पड़ी हुई है रोड के ऊपर, तो गाड़ी जब मोड़ काट के या मिट्टी के ऊपर चढ़ती है तो जो टायर पहले जाकर टकराता है वो थोड़ा आस्ता हो जाता है और दूसरा आकर टकरा, फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। यही कुछ वहां पे होता है, स्पीड चेंज हो रही है, मीडिया चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। As the wheels approach the mud, यही देखें, ये रुक गया, उसकी स्पीड कम हो गई है, ये बदल जाएगा, दोनों की स्पीड बराबर हुई है, अब चलना शुरू करेंगे। into the mud first. Now it is harder for the wheels to move in the mud than on the tar, so these wheels slow down. But at the same time, क्यों अब क्या हुआ कि जो मड है उसके अंदर रेजिस्टेंस फॉर द मोशन ऑफ द व्हील्स ज्यादा है, जो रोड था उसके ऊपर कम थी, कम रिस्ट्रिक्शन थी, कम मज़ामत थी व्हील्स की मोशन के खिलाफ। अब वहां पे क्या हुआ, व्हील्स की मोशन के खिलाफ मज़ामत ज्यादा है, तो क्या स्पीड कम हो गई। इसी तरह जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है, बाकी डेंसिटी कम है, ग्लास की डेंसिटी क्या ज्यादा, तो जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है तो जो लाइट के फोटॉन्स उनकी स्पीड भी चेंज होती है। समझ आया? ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडिया, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। समझ आया? डेंसिटी डिफरेंट है, पार्टिकल्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो डिफरेंट है, सो देयरफॉर क्या हुआ, जो लाइट की स्पीड है डिफरेंट मीडियम में वो डिफरेंट है। इस वजह से क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो अपना पाथ चेंज करेगी ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। सिमिलरली ये व्हील भी कर रहे हैं, इनकी भी स्पीड चेंज हो रही है, रोड से जैसे मड में है स्पीड चेंज है। other wheels are still on the tar and keep moving at their original speed until they also move into the mud.
लेकिन ये कब होगा, जब आप किसी एंगल पे मड में जाना शुरू करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी थोड़ी सी, ये वाला टायर रुक गया, वो वाला टायर आ गया और गाड़ी मुड़ के उसके अंदर जाएगी। लेकिन अगर आपने गाड़ी बिल्कुल सीधी दाखिल की इसके ऊपर, ये गाड़ी के व्यूज को आप क्या समझे, वेव फ्रंट समझे या रे ऑफ लाइट। जब याद रखिए आपकी गाड़ी बिल्कुल जो आपकी वेव फ्रंट है वो जाकर बिल्कुल पैरेलल टकराती है उसके साथ, या आपकी जो रे है वो 90 डिग्री के एंगल बना के आपकी सरफेस के साथ टकरा रही है। नहीं समझ आ मेरी बात? तो फिर क्या होगा, Once they are also in the फिर mud, कुछ will both wheels be moving at the same speed? The result of the wheels moving at two different speeds is the axle changing direction. The wheels turn to the left of the screen. आप समझ आया कि वो जो डिफरेंट स्पीड थी दो टायर्स की, उसकी वजह से जैक्सन उसने भी अपना अपना रुख चेंज किया, अपने आप को टिल्ट किया, अपने आप को रोटेट किया। But it changes direction because the wheels have changed how fast they are going. The wheels changed speed because they moved from a surface that was easy to move on to one that was difficult to move in. Now watch as the wheels move from the tar to the mud again. But this time, the wheels will move into the mud in a direction that is perpendicular to the boundary surface. Watch the wheels move. What do you notice? That's right. The wheels didn't change direction. They simply slowed down because it is harder to move in the mud than on the tar. अब डायरेक्शन चेंज हुई, इसकी क्या वजह अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। इसका प्रूफ भी है, आपको प्रूफ भी दूंगा कि जब जो वेव्स हैं वो या रे ऑफ लाइट जो है वो किसी भी सरफेस में या किसी भी मीडियम में परपेंडिकुलरली इंटर होती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वो अपना पाथ चेंज क्यों नहीं करते हैं? अगर टिल्टेड या एट सम एंगल को दाखिल होती है तो उनका पाथ चेंज होता है। इसकी क्या वजह? पर अगर वो एट राइट एंगल जो वेव फ्रंट्स है वो जाकर टकराती हैं उसके साथ, या जो रे है वो सरफेस के साथ जाकर 90 डिग्री के एंगल बनाती है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ वेव्स चेंज क्यों नहीं होती? इसकी क्या वजह? If we compare the first situation to the second situation, we can see that there is another condition for the wheels to actually change direction. Can you see what it is? We can see that for the wheels to change direction, they must actually move into the mud at an angle. समझ आ गया? समझ आ गया? But in both cases, the wheels still slowed down. These wheels on the axles were a representation of a light wave front. The tar and the mud represent different media that light can move through. The medium that light travels through can be anything that allows light to travel through it, such as air, water, glass, even Perspex or plastic. Light travels faster in air than in water or glass. When light moves from one medium to another, it can slow down or speed up depending on the media on each side of the boundary. When light moves from air into water, it will slow down, but when moving from water into air, it will speed up. We have also noticed that while changing speed, light may change direction as well, depending on the angle the light strikes the boundary. From everything we have just discussed, do you think that you could write a definition for the refraction of light? So, how did you do? Refraction is the change of the speed of light as it moves from one medium to another. This change in speed may result in a change of direction depending on the angle at which the light hits the boundary. So, now we know what refraction is and why light changes direction. We need to see if we can predict which way the light will move. To do this, we will need to conduct an investigation. So, let's cross over to the lab. Hello there guys, today we're going to investigate how the light travels through a rectangular Perspex block. Now I'm going to put my block on a white piece of paper and draw a mark around it. Now I'm doing this so that once I've done my investigation, I can be able to measure my angles. Now, we need to measure our angles to help us discover any relationship between the angle at which the light strikes the block and the angle at which the light is refracted by. Now remember when we dealt with reflection, we measured the incident angle from the normal. Do you remember what the normal is? Let me remind you.
The normal is an imaginary line drawn perpendicular to the boundary. Now the normal is a very useful reference line which can be used to measure angles, even though the surface on the boundary is not straight or smooth. Now we're going to dim our lights so that we can see properly how the light travels through the Perspex block. Okay, have a look here. I've already prepared for my experiment. I've outlined the block, I've drawn in the normal already, and I have my incident ray at 45 degrees to my normal. Now let's have the light on and see. It's coming up, there we go. Now the light is traveling through on the straight line, but now I want to show you something. Let's put in the block and see what happens. Do you see what happens? The light has changed direction. First, as it enters the block, it changes the direction, and when it leaves the block, it changes the direction once more. Now what I'm going to do, I'm going to mark the point where it leaves the block. Up to where the ray travels. And then, I'm going to connect my 2 points. Use the block. समझ आया? लाइट आ रही रखने पे डायरेक्शन चेंज होगी. On the straight line. What a beautiful thing. But now I'll I show like you it. something. तो खूबसूरत अंदाज में इस बंदे ने See एक्सप्लेन what किया. happens. Do you see what happens? The light has changed direction. First, as it enters the block, it changes the direction, and when it leaves the block, it changes the direction once more. Now what I'm going to do, I'm going to mark the point where it leaves the block. नजर सही आ रहा है? Up to where the ray travels. And then, I'm going to connect my 2 points. There we go. Let's switch off the light. Now using a protractor, I'm going to draw a normal from the point where the light left the block. Now remember that the normal is always 90 degrees from the surface. There we go. Gonna join my 2 points. Now we have the normal from the point where the light left the block. Now I'm going to join the 2 points from where the light entered the block up to where the light left the block. There we go. Okay, now I'm going to measure my angles. I'm going to start with this one here. Angle of refraction from the time the light traveled into the block. Using my protractor, it's at 30 degrees. There we go. And now I'm going to measure this angle here. The angle of incidence just before the light left the block. कितना होना चाहिए वैसे ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? इसको हो क्यों? देखो ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए? ये दोनों लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन और ये इनके ऊपर ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हुए. 30 ये भी 30 होना चाहिए. प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद ठीक है, आगे चलते हैं. ये also 30. And it's also 30 degrees. There we go. And my last angle
the angle of refraction Could also be from the point where the light left the block. This angle here. उस पॉइंट पे रखेंगे और चेक करेंगे किस रे के साथ ये मीट कर वही ऊपर वाला होगा जो वहाँ पे And it's 45 degrees. There are two angles equal to 45 degrees and two angles equal to 30 degrees. Now let's go back to studio and analyze these results. Bye. Thanks, Aaron. That experiment has given us a lot of data to examine. We can now see what happens when light hits the block at an angle of 45 degrees. The light ray enters the block and is refracted. Notice the ray moves in a straight line until hitting the second boundary. Here, the light is refracted again and leaves the block at an angle of 45 degrees. Can you see a pattern with the angles we have measured? इंटीरियर में सारे 30 डिग्री के बाहर सारे Both the incident ray and the emergent Emergent ray form an angle of 45 degrees with opposite sides of the block. These sides are parallel to each other. Next, we need to see if there is a pattern that we can use to predict the change in the direction of a light ray when moving from one medium to another. Remember that light travels faster in some media than in others. You can think about this in terms of the molecules that make up the medium. Can you see that it is easier for light to travel through air where the molecules are further apart than for light to travel through Perspex, for example, where the molecules are very close together? We measure how easy it is for light to move through a medium using a quantity called optical density. ऑप्टिकल डेंसिटी को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या बताता है आपको कि द मेजर हाउ इजीली लाइट मूव्स थ्रू ए मीडियम, कि लाइट जो है कितना आसानी के साथ किसी मीडियम से पास कर सकती है। अगर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हुई तो लाइट को उस मीडियम से पास होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, लाइट की स्पीड ज्यादा डिक्रीज करेगी उस मीडियम में जाकर। बात समझ आई? इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द लाइट टू पास थ्रू दैट मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी वो लाइट को मूव करने में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। Called optical density. If light can move through a medium quickly, such as air, it will have a low optical density. If light moves through a medium slowly, we say that the medium has a high optical density. Perspex has a high optical density. So with our block, we have the light moving from air to Perspex to air again. The light is moving from a low optical density to a high optical density to a low optical density again. We notice that the speed of light is changing from fast in air to slow in Perspex to fast in air. Let's consider the first boundary the light hits in more detail. We are going to compare the size of the angle of incidence with the angle of refraction. You can see that the angle of incidence is bigger than the angle of refraction. बात समझ आई? इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर लो डेंसिटी के मीडिया से लाइट दाखिल हो रही है हाई डेंसिटी के मीडियम में तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। ये बात। So the light moved closer to the normal. Therefore, as light moves from a low optical density to a high optical density, we say that the light is refracted towards the normal. The angle gets smaller. This happens when the speed of light decreases. Let's now consider the second boundary. Here, the light is moving from a high optical density, Perspex,
to a low optical density A. Now let's compare the angle of incidence with the angle of refraction here. This time, the angle of incidence is smaller than the angle of refraction. So the light is moving away from the normal because the angle is getting bigger between the normal and the light ray. This means that as light moves from a high optical density to a low optical density, we can say that the light is refracted away from the normal. बात समझ आई? अगर हाई डेंसिटी मीडिया से लो डेंसिटी मीडिया में लाइट जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी उधर जाके। मतलब ये याद रखो, जब डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, या ये कह दिया जाए कि जब लाइट लो डेंसिटी के मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। ये बातें याद रखो। The angle gets bigger. Here, the speed of light has changed too. Inside the block, the light was traveling slower but increased speed when crossing the boundary into air. So, let's put all the facts we have collected together. This diagram shows what happens when light moves through a rectangular Perspex block. And now we have a completed ray diagram which shows how light is refracted through a rectangular Perspex block. Now I want you to apply what you have learned in today's task. Using different shaped objects, investigate how light is refracted through these objects. Specifically look at how light moves towards or away from the normal. You can use a glass filled with water and use a torch as your source of light. You can cover the torch with some cardboard that has a small slit cut in it. Make sure to draw diagrams of what you see so that you can communicate the results of your investigation. Here's a final thought for today's lesson. Now that we know that refraction occurs because there is a change in the speed of light when moving across a boundary, what does this tell us about the nature of light? We know that waves are refracted, but don't particles change speed when they move into a different medium? The tennis balls bounced off the walls, but if I threw a stone into a pool, it wouldn't stop. It would just slow down and sink to the bottom of the water. So maybe light could be described as a particle after all. Do join me for the next lesson when we will look at more examples of refraction. तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपने जो सुना ना अभी वो सारा कुछ आपको समझ आ गया बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई कसर रही नहीं है। तो पढ़ लेते हैं आप एक दफा। तो if you dip one end of the pencil or some other object into the water at an angle to the surface, एंगल बनाएंगे तो बेंडिंग इधर आएगी, एंगल नहीं बनाएंगे तो बेंडिंग इधर नहीं आएगी, 90 डिग्री में दाखिल करेंगे। The submerged part looks bent as shown in the figure number 12.7. Its image is displaced because the light coming from the underwater portion of the object changes direction as it leaves the water. This bending of light as it passes from one transparent medium into another transparent medium is called refraction. फिर यही एक्सपेरिमेंट जो भी हमने देखा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिगर नंबर 12.8. A ray of light IO, ये रे है, this is I, this is O. A ray of light traveling from the air falls on the surface of a glass block at air glass interface. ये मतलब ये इंटरफेस का मतलब बाउंड्री, ये उन दोनों के, यहाँ पे एयर है यहाँ पे ग्लास है, तो इन दोनों के इंटरफेस के ऊपर मिलाप के ऊपर। तो at the air glass interface the ray of light IO changes direction and bends towards the normal. और किधर को बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड, क्योंकि वो लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में जा रही है, ठीक है, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताया था कि ये जो नॉर्मल है असल में ये सरफेस को शो कर रहा था, ठीक है, और ये जो रे है ये लाइट वेव्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैंने उस दिन बताया था कि जो लाइट वेव्स हैं, जो एंगल वो जाके सरफेस के साथ बनाएंगी, ठीक है, ये रे जो कि लाइट वेव्स के नॉर्मल है सरफेस पे नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाएगी, ठीक है। तो अब हम एंगल बिटवीन द रे एंड नॉर्मल चेक करेंगे।
समझ आया? So IO changes its direction and bends towards the normal and travels along the path OR inside the glass block. The ray IO and OR are called the incident ray and the refracted ray respectively. So this ray that is striking or hitting the boundary of the glass, this is called the incident ray, and the ray that is bending towards the normal, this is called the refracted ray. Problem किसी को? The ray IO and ये कर लिया हमने. The angle I, ये वाला एंगल जो आपके इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रहे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल, दैट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So the angle I made by the incident ray with the normal is called the angle of incidence, and the angle R made by the refracted ray with the normal is called the angle of refraction. ये वाला एंगल क्यों नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंट लेते हैं हम लोग? क्योंकि ये रे है, वेव नहीं है. रे वेव के नॉर्मल है और ये नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो देयरफॉर द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स. सो देयरफॉर हम नॉर्मल्स का एंगल मेजर करेंगे और ये वही एंगल होगा जो वेव सरफेस के साथ आगे बनाएगी. When refracted ray leaves the glass, it bends away from the normal and travels along a path ME. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ चीजें हैं. तो हमने यहां से दो डिडक्शंस की हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से, लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम की तरफ जाएगी तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट मूव करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये भी हमने देखा. When the refracted ray leaves the glass, it bends away from the normal and travels along the path ME. This is the path. This is the emergent ray. Thus, ये आपकी बुक पे definition, the process of bending of light as it passes from air into glass and vice versa is called refraction of light. इन्हें सब ग्लास के लिहाज से कहा, ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी लाइट जाएगी तो वो अपने पाथ को चेंज करेगी. दिस बेंडिंग ऑफ the path of light is called the refraction. So physics inside जी, इंसिडेंट रे आपके पास आ रही है, उन्होंने वेव फ्रंट्स भी यहाँ पे ड्रॉ की हैं. ये दो वेव फ्रंट्स का दरमियानी फासला एक वेवलेंथ के बराबर होता है. क्या कह रहा है जी? इन रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ. होता क्या? जब वेव्स ऑफ लाइट दाखिल होती हैं डेंसर मीडियम में तो जो वेवलेंथ होती है वो रिड्यूस कर जाती है. समझ आया? पहले वेवलेंथ ज्यादा थी, अब वेवलेंथ क्या कम हो गई है. जैसे जैसे आपकी वेव फ्रंट्स डेंसर मीडियम में दाखिल होते जा रही हैं तो उनकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है. तो वेवलेंथ के कम होने से स्पीड भी क्या जाती है? कम हो जाती है. ये लिखा हुआ in refraction the speed of light changes due to the change in wavelength but frequency and hence the color of light does not change. लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सोर्स डिपेंडेंट होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मीडियम डिपेंडेंट होती हैं. वेवलेंथ और स्पीड दोनों मीडियम डिपेंडेंट हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. समझ आया जी? सो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, कलर भी चेंज नहीं होता. बट यहाँ पे देखें जी, ये आपको मछली नजर आ रही है यहाँ पे नीचे पाउंड के अंदर, लेकिन जब आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये मछली आपको नजर आएगी कहीं यहाँ पे, हालांकि है कहाँ पे? यहाँ पे. सो देयरफॉर कोई आप निशाना भी लेंगे तो आप उसके इमेज का ले रहे हैं, मछली का नहीं ले रहे. आप मछली को नहीं पकड़ रहे. बात समझ आई नहीं गई? सो देयरफॉर ये हो क्यों रहा है? वैसे सवाल ये है, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बताएं कि मछली अपनी असल पोजीशन से थोड़ा ऊपर क्यों नजर आ रही है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. और काफी डिटेल में भी हमने इसको देखा. तो ये क्या हुआ है? द पोजीशन ऑफ द फिश इनसाइड द वाटर सीम्स टू बी at less depth than that of its actual position. This is because of refraction. क्यों? क्योंकि रेज ऑफ लाइट जब वाटर से बाहर आएंगी तो अपने रास्ते से बेंड कर जाएंगी. उस बेंडिंग की वजह से क्या होगा? जो इमेज है, जो हम असल में मछली को नहीं देख रहे होते हैं, हम उसके इमेज को देख रहे होते हैं. तो बेंडिंग की वजह से जो फिश है उसका इमेज हमें दिखाई देगा, क्योंकि हमारा दिमाग तो लाइट को परसीव करके स्ट्रेट पाथ में सफर कर दिया है. जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ. सो देयरफॉर हमें जो मछली नजर आएगी वो कहां पर नजर आएगी? वो उसका इमेज नजर आएगा. मछली तो नजर ही नहीं आएगी हमें, तो हमें उसका इमेज उस पॉइंट से थोड़ा ऊपर नजर आएगा. समझ आ नहीं है? अब इमेज ऊपर क्यों मान रहा है? बेकार लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ. तो हम तो यही कहेंगे कि जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा. क्यों? हमारी आंख इन रेज को देख रही है, तो हमारी आंख इस मछली का एक इमेज बनाएगी यहां पे और उसको देख रही है.